Very good morning, students. Welcome to learning classes of business studies. Today in this lecture I am going to cover last topics of chapter 3, that is business environment. These topics are impact of change in economic policy and managerial response to changes in business environment. See beta, impact of government policy changes on business and industry. Number 1, increased competition. बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था बेटा गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस का? देयर आर मैनी फैक्टर्स एंड फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच हैज़ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस. The common influence and impact of such changes in business and industries are: number 1, increasing competition. Delicensing and entry of foreign firm in Indian market has increased the level of competition for Indian firms. बेटा जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और MNCs को अलाउड कर दिया इंडियन मार्केट में एंटर करने के लिए, तो देयर वर लॉट ऑफ competition. The companies which could adopt latest technologies and which were having large number of resources could only survive and face the competition. तो इट मीन्स आपकी जो MNCs थी उनको फेस करने के लिए आपको अपने इंक्रीज लेवल ऑफ competition की वजह से आपकी जो इंडियन फर्म्स थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी. दे हैव टू अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज and they have to adopt large number of resources so that they can survive in the market. Number 2, more demanding customer. Prior to new economic policy, there were very few industries or production units. As a result, there was shortage of product in every sector. Because of shortage, the market was producer oriented. Producer become key person in the market. But बेटा बिफोर 1991 देयर वर शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए प्रोड्यूसर जो था की प्रोडक्ट था मार्केट का, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट था. बट after 1991 there were many companies which entered in the market. और उसके बाद क्या हुआ कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज हो गई, बिजनेसमैन ज्वाइन द प्रोडक्शन लाइन एंड वेरियस फॉरेन कंपनीज ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड देयर प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया. एज अ रिजल्ट देयर वॉज सरप्लस ऑफ प्रोडक्ट इन एवरी सेक्टर. और इसकी वजह से जो शिफ्ट था शॉर्टेज से ले शिफ्ट किस में आ गया, आपका सरप्लस पे आ गया. और इस वजह से हमारी जो मार्केट था प्रोड्यूसर ओरिएंटेड से किस में आ गई, आपकी कन्वर्ट हो गई बायर ओरिएंटेड में. इट मीन्स नाउ the customers are more aware and they keep maximum information of the market, as the result of which now market is customer oriented. और अब जो था कस्टमर्स को जब डिफरेंट कंपनीज मिल रही थी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, तो कस्टमर भी बहुत ज़्यादा वो मार्केट इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते, दे आर अवेयर, वो बहुत सारी मार्केट इन्फॉर्मेशन अपने पास रख रहे थे, सो दैट दे द काम मार्केट बिकम बायर ओरिएंटेड. नाउ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड कीपिंग इन माइंड द डिमांड ऑफ द कस्टमर. Number 3, rapid changing technological environment. Rapid technological advancement has changed or improved the production process, as a result of which maximum production is possible at minimum cost, but it leads to टफ चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ स्मॉल फर्म्स. जो रैपिड चेंजेस होने लगे थे बेटा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, उसकी वजह से क्या हो गया था कि देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई थी मार्केट में, और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के लिए ग्लोबल कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया था. एंड टू अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, द इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैज़ टू इंक्रीज, and it is creating a tough challenge in front of small firms. Number 4, necessity for change. After new economic policy, the market forces are changing at very fast rate. Changes in various components of business environment has made it necessary for the business firm to modify their policies and operation from time to time. It means there should be, prior 1991, business enterprises could follow stable policies for a long period of time. But after 1991, the business enterprises have to modify their policies and operations for time to time so that they can continue in the market. क्योंकि 1991 के बाद बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गई थी, और अगर कोई भी कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट नहीं कर रही थी तो दे हैव टू बी आउट फ्रॉम द मार्केट. Now see the next point beta, need for developing human resources. The changing market condition of today requires people with higher competence and greater commitment. Hence there is a need for developing human resources. Now see the next beta, need for developing human resources. The changing market condition of today requires people with higher competence
and greater commitment. Hence there is need for developing human resources. With not only बेटा सिर्फ टेक्नोलॉजीज़ में नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज को भी डेवलप होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज इंडियन मार्केट जो था फेस कर रहा था कॉम्पिटिशन विद MNCs ऑफ द कंट्री. MNCs हैव एडवांस टेक्नोलॉजीज़, तो हमारी कंट्री को भी ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना था सो दैट दे कैन adopt all these advanced technologies in their firm also. Now see the next point beta. Sixth, market orientation. Earlier selling concept was famous in market, now its place is taken by the marketing concept. पहले selling concept था before 1991, अब marketing concept आ गया था. Marketing concept के accordingly you have to plan production on the basis of market research, need and want of the customer. Today firm produce those goods and services which are required by the customers. Marketing research, educational advertising, after sale services have become more significant in the market. So market orientation is necessary to be in the market. Now see the 7th point, reduction in budgetary support to public sector. पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को जो था रिडक्शन करना था बजटरी सपोर्ट में, सो दैट दे कैन हेल्प दीज प्राइवेट सेक्टर्स टू ग्रो इन द मार्केट. द बजटरी सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर इज रिड्यूसिंग. Thus the public sector have to survive and grow by utilizing their own resources efficiently in the market. Now see the next topic beta. Managerial response to change in business environment. On the whole, the impact of government policy changes are particularly in respect of liberalization, privatization and globalization. तो सबसे पहला जो आपका इम्पैक्ट था गवर्नमेंट मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट वाज डाइवर्सिफिकेशन. द फर्स्ट रिस्पॉन्स सीन आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज कंपनीज आर गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन. जो सबसे पहला चीज़ देखा था हमने मैनेजरियल रिस्पॉन्स का इन कंपनीज, दैट वाज डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन means, for example, the state owned BHL said that with new wave of economic changes we will diversify our portfolio that will include solar energy, transportation and water buses. डाइवर्सिफिकेशन एक सबसे बड़ी पॉलिसी थी तो अडॉप्ट करी थी मैनेजरियल रिस्पॉन्स था आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. इसमें जो न्यू कंपनीज थी जैसे रिलायंस हो गया, वोल्टास हो गया, LG, सैमसंग आर डाइवर्सिफाइंग देयर एक्टिविटीज़ बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट इन देयर पोर्टफोलियोज. Now see number 2 beta, joint venture. Most of multinational companies came to India through joint venture. कई सारी कंपनीज़ ने कोलैबोरेशन कर ली. जॉइंट वेंचर मतलब कोलैबोरेशन विद मल्टीनेशनल कंपनीज़. तो इंडियन मार्केट में कोलैबोरेशन स्टार्ट हो गया था, इन जॉइंट वेंचर स्टार्ट हो गया था. बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ ने बाहर की कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके न्यू फर्म ओपन कर ली थी. फॉर एग्जांपल फोर्ड एंटर्स विद महिंद्रा एंड महिंद्रा, होंडा एंटर्स विद सेल, जनरल मोटर्स विद हिंदुस्तान मोटर्स. तो कोलैबोरेशन का फॉर्म वो क्या था, प्रॉफिट क्या था इनका, कि दे आर गेटिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज इन देयर प्रोडक्ट ऑल्सो. Number 3, brand building. After new economic policy, the brand building, goodwill and image of company has become an important element for promotion of company. Now companies are spending huge amount on various promotional activities. Brand building एक most इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया था आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. गुडविल को मेंटेन करना, इमेज मेंटेन करना है मार्केट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया था. न्यू कंपनीज बहुत सारा पैसा लगा रही थी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स है, ब्रांड बिल्ड फॉर देयर ब्रांड बिल्डिंग, कस्टमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही थी ताकि कस्टमर्स सेटिस्फाइड हो. ये सैमसंग, LG, सोनी, ये सब ब्रांड बिल्डिंग में लगे हुए थे सो दैट देयर प्रोडक्ट विल बी देयर इन द मार्केट. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़. To get the first mover advantage, companies are trying to get the latest technology in their product. Expenditure on research and development department is increased by all the companies. अब latest technologies के लिए उन्होंने अपना जो expenditure था वो product and research department पे लगाना शुरू कर दिया था so that they can adopt latest technologies in their firm. Next, improved compensation level. With the entry of MNC, there is lot of changes seen in the salary packages of all the employees in managerial as well as technical changes. जब आपका जो compensation level भी change हुआ था, जब एंट्री करी थी MNCs ने, तो lot of changes देखने को आए. Even salary packages of employees भी change हुआ. The starting salary for engineers and management graduate have been rising significantly. Companies are following performance linked bonus schemes, incentives for better performance. ये common techniques हो गया था which companies are adopting now. Next is customer focus. The focus of market is totally shifted from producer to customer. Even after sales services has become
very important to satisfy the customers. Many companies are providing 24 into 7 complaint registration services through toll free number. कस्टमर फोकस बढ़ गया था, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो गया था. कंपनीज 24 इंटू सेवन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी अपने कस्टमर्स को, ताकि उनके कस्टमर सेटिस्फाइड हो और प्रोडक्ट उनका मार्केट में सेल हो जाए. तो दीज आर द मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन business environment. I hope you all understand. Your chapter 3 has been completed, business environment. Now in my next lecture I will explain you case studies of this chapter. Make notes in your copies, do all the work in your copy and do assignment also. Thank you beta, have a nice day.